Okay, good morning, students. So, we are starting with chapter number 9, which is ledger. Okay, now ledger is based on journal entries, so we will understand ledger in a practical way. And you already know ledger. Cash book was one type of ledger itself. So, if you know the journal entries, then in computer ledger is automatically prepared. So, let us understand in a practical way past journal entries of Messrs. Bhanu Traders Delhi from the following transactions and post them to the ledger. So, from journal, when we post or when we write in a special account which is called ledger account, then this process is called posting. So posting means mentioning or recording the journal entries from journal book to the ledger. So this process is called posting. So let us do posting. So before we start posting into ledger, question also asks us to prepare journal. So we need to prepare the format for journal. So I'll write date, particulars, ledger folio number, debit and credit. There are many journal entries. I need 2 page, date, particulars, ledger folio number, debit and credit. Now first 2020 April 1 business commenced with cash 1,50,000. So 2020 April 1. So cash is coming into the business, cash account debit to capital account. So cash to capital is the journal entry when we introduce money in the business or start business with some money. So narration I am not expecting because in ledger already more time is needed. So writing of narration when question is of ledger will be specified in the question. If not specified, you may not write. Then we have on April 2 opened a bank account with PNB, Punjab National Bank, 50,000. So on April 2 bank balance is increasing. It is Punjab National Bank's account. I am not writing name of the bank, I am just writing bank account. So बैंक में पैसे आ रहे हैं and we must have deposited cash to open the account. It is 50,000. So bank account debit to cash account 50,000. And we know this one is contra entry in which cash and bank are in opposite positions. Then I have next purchased furniture 20,000. So furniture is coming into the business. So furniture account debit. When purchase of goods is there, we debit purchase account. When purchase of asset is there, we debit asset account. Now here nothing is given, so we need to assume that it is for cash because name of the party or creditor is not given. So cash will go out 20,000. So furniture account debit to cash account 20,000.
Then we have next one on April 7, bought goods for cash. So when it is for cash, name of the party is not important. When we buy goods, purchase account debit and cash account credit. So on April 7, purchase account debit and cash account credit. We are buying the goods of 30,000. So amount is 30,000. Okay, let's move on to the next one. These are very easy journal entries. On April 8, purchase goods from Hema Traders. So purchase goods. So on April 8, purchase account debit, but here for cash is not mentioned and name of the party is given, so we assume it is credit purchase. So to Hema Traders account, what is the amount? Amount is 42,000. So I will write 42,000. Then we will move to the next transaction. It is on April 10, cash sales, it is 30,000. So cash account debit, sales account credit, it is 30,000. Cash sales, cash account debit, sales account credit. Next we have on April 14, sold goods meant sales account credit, on credit to Gupta Traders. So debit the receiver of goods on April 14th. Gupta Traders account debit to sales account. What is the amount? Amount is 12,000. Now next one on April 16th, it is rent paid 4,000. So rent is my expense, so I will debit rent account 4,000 and I have paid rent, so to cash account 4,000. So rent account debit to cash account 4,000. So let's move on to the next one. On April 18, paid electricity expense 1,000. So on April 18, electricity expense account debit to cash account, amount is 1,000. Then we have next received cash from Gupta Traders 12,000. So on April 20, received cash, so cash account debit, credit the giver. Who is the giver?
Gupta Traders. So to Gupta Traders account, amount is 12,000. So I have received 12,000 from Gupta Traders. Okay, then let's move on to the next one. We have on April 22 goods returned to Hema Traders. So look here, earlier we had purchased from Hema Traders, okay, on April 8, and now we are returning some goods. So पहले when we purchased from Hema Traders, purchase to Hema Traders ये entry pass हुई थी. Now we will pass reverse entry, debit the receiver of goods. Here it is Hema Traders. So Hema Traders account debit to purchase or purchase return. Yes, purchase return. Okay, so when we are returning the goods, we credit purchase return account. What is the amount of purchase return? It is 2000. तो what is the thumb rule? परचेस डेबिट होता है और परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है, एंड सेल्स क्रेडिट होता है बट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है. देन वी हैव April 23 कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स 40,000. So it's on 23 cash paid to Hema Traders. So Hema Traders account debit to cash account. I have paid cash. Amount is 40,000. Let's move on to the next one. On April 25, it is given bought postage stamps. It is one type of expenditure. Postage stamps is the thing which we paste on some letters if we are sending the letter by Indian postal system. So it's like courier expense, okay, but I will write on April 25 postage expense account debit, and when I buy, cash will go out to cash account. So I have bought postage stamps of rupees 100. Then on April 30, I have paid salary to Mohan 4,000. So on April 30, paid salary. Salary is my expense, to salary account debit. But when it is mentioned that paid, I have already paid, तो cash will go out. मोहन अब important नहीं है, because money is going out. I have already paid. So जब हम पे या रिसीव करते हैं तो पार्टी का नाम is not important. So it is 4,000. So with this we are able to pass all the journal entries. Now we need to prepare the ledger accounts. Please note there will be many ledger accounts. First of all, we need to be clear how many ledger accounts we are supposed to prepare.
So first of all, we will prepare cash account. Cash account is nothing but the cash book which we have already prepared. Okay, so cash account is there. Second is bank account. Cash book may we were preparing double column cash book. It was actually cash and bank account combined. So here you have the option, either you prepare combined or separate one. I am preparing separate one. Okay, so here cash account, then I have capital account, then I have bank account, then furniture account, means 4 accounts हुए. Fifth is purchase account, sixth is Hema traders account, then seventh is sales account, eighth is Gupta traders account, ninth is rent account, 10th is electricity expense account, 11th is purchase return account, 12th is postage expense account, and 13th is salary account. Total 13 different accounts involved है. So we need to actually prepare the format for 13 ledger accounts. Okay, so how to do this? Let me share with you the format of ledgers. So for preparing the ledger, I can advise you to take 2 pages side by side, and we have left and right side. Okay, so divide left page into 2 parts. And your format will be like this. Now let me share the format. First of all, cash account we need to prepare. So I will write cash account, and you need to write debit on left side and credit on right side. Then I have date, then particulars. आप रिसिप्ट्स लिख सकते हो, लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट सिर्फ कैश या बैंक अकाउंट के लिए होगा, बाकी अकाउंट के लिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स नहीं होता है. सो हैंस यू मे राइट पर्टिकुलर्स. ओके, रिसिप्ट्स पेमेंट्स कैश बुक में लिखोगे तो चलेगा. सो बिकॉज मैं हर लेजर अकाउंट के लिए हेडिंग्स नहीं लिखूंगा, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम. देन आई हैव JF नंबर. JF मीन्स जर्नल फोलियो नंबर. ओके, एंड देन आई हैव अमाउंट. अगेन सिमिलर pattern on the credit side, date, then particulars, then journal folio number, and then I have amount. But there are so many ledger accounts, so I need to do these steps again for second page also. So again your right hand side page should be divided into 2 parts, half parts, and you need to prepare the format like this. First one is for date, then particulars, then smaller for journal folio number. It will be empty most of the time or all the time. And similar pattern on the credit side, date, particulars, okay. So now here I have this thing. I will write debit on left hand side and credit on right hand side. So
date, particulars, journal folio number. देखो, in journal we write ledger folio number, in ledger we write journal folio number. रिलेशनशिप ये है कि अगर आप बुक्स में जर्नल एंड लेजर बनाते हो तो पेज नंबर, तो जर्नल फोलियो नंबर या लेजर फोलियो नंबर इज़ नथिंग बट द पेज नंबर. ओके, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट में हम लिखते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो वो सेल्स अकाउंट की जर्नल एंट्री जर्नल के जो पेज पर होगी वो पेज का नंबर लिखना है. तो इसीलिए जनरली पेज नंबर्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, हैंस इट इज़ ऑफ नो यूज़. इवन इफ यू डोंट प्रिपेयर इट्स फाइन. Amount, so again date, particulars, then journal folio number, and then I have amount. Okay, so let us prepare the ledger account. So first I had to prepare cash account, उसके बाद है कैपिटल अकाउंट. एंड यू कैन सी कैश अकाउंट में बहुत सारी एंट्रीज है, बट कैपिटल अकाउंट में तो हार्डली कोई एंट्री है. सो इट मीन्स कैश अकाउंट में यू नीड मोर लाइन्स, सो आई कैन सजेस्ट यू कैन लीव अप्रोक्सीमेटली 12 लाइन्स फॉर कैश अकाउंट. ओके, एंड देन आफ्टर लिविंग 12 लाइन्स what you can do, you can have a bifurcating line where you will prepare another account, and our next account was capital account. So here I will write capital account. Okay, already headings I have written on the top, so no need to write the headings. And in capital account, if there is only 1 or 2 entries, then if you leave 4 lines then also it is sufficient. But don't forget to write debit and credit each time. Okay, so after leaving 4 lines I need to prepare next account. Let's see which is that account in the question. After capital I have highlighted. Next we'll prepare bank account. So in bank account also there are few entries. Okay, so you need to have judgment कि कितनी lines ज़रूरी है. ज़्यादा lines होगी तो प्रॉब्लम नहीं है, कम lines होगी तो प्रॉब्लम होगी. So bank account debit, it takes some experience, so I can suggest कि एग्ज़ाम में try to see that you are leaving more lines. So in bank account, let's say कि approximately 5 lines I feel is sufficient, because in this question very few transactions were there involving bank account. Then next account which I will prepare, let's see which is that account. After bank I have furniture account, and then I have purchase account. Okay, so in furniture also there is only one entry, but we need to prepare the ledger. So I will write furniture account. If there is only one entry, then 3 or 4 lines is sufficient. So debit and credit. After furniture I need to prepare purchase account. Okay, so I think I will be requiring more space, so I am preparing purchase account on other side. Purchase account, so I think 2 or 3 purchases might be there, so I can leave around 6 lines for purchase. So after I have prepared purchase account, I will prepare the next ledger account. Let's see which is the name. After purchase I need to prepare Hema Traders account. So I will write Hema Traders account, debit and credit. Here also around 5 or 6 lines are sufficient. Okay,
then I will prepare next account. Let's see which is that account, sales account. Okay, I will prepare sales account. Again debit and credit, again around 5 lines are sufficient when 2-3 entries are there. After this, after sales, I will prepare next account. Let's see, it is Gupta Traders account. So I will write debit Gupta Traders account and credit. Here also around 4 or 5 lines are sufficient. Number of lines I am mentioning so that you get proper space. Then I need to prepare rent account after Gupta Traders. So I will prepare next account, which is rent account. So debit rent account, again around 4 lines are sufficient. If there is only one entry, even 3 lines are sufficient. Okay, so after I have prepared the rent account, next account I need to prepare electricity expense account. So I think I need to go for the next page as well. So ledger is actually a clerical job. Clerical means it doesn't require application of brain. It is not much important, क्योंकि जिसमें सोचना नहीं है. कंप्यूटर तो खुद ही आपको लेजर बना के दे देगा. सोचना पड़ता है जर्नल में, एंड जर्नल इज़ द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटेंसी. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड जर्नल देन you understand accounting. Okay, so everything in accountancy is based on journal. So I have moved to the third page to prepare more ledger accounts. In exam I will ask you to prepare only few ledger accounts, not all, because it takes more time. So here I have debit, credit, then date, then particulars, then I have journal folio number, and I have amount, and I think I have prepared one extra column. Okay, so I need to erase that extra column. So then it's date, then particulars, then journal folio number, and then amount. So let's see, after rent we were supposed to prepare electricity expense account, then purchase return account. So I will write electricity expense account, again 4 lines are sufficient. Then next is purchase return account, again 4 lines are sufficient. So I will write purchase return account, and after purchase return account I need to prepare postage expense account and salary account. So in purchase return also 4 lines are sufficient, and then I need to prepare postage expense account, again 4 lines are sufficient, and then I need to prepare salary account, again 4 lines are sufficient.
So here I will stop. So let me prepare postage expense account. So postage expense account, debit and credit, and finally I will prepare salaries account, debit and credit. So after preparing the format, let us post these entries. Okay, now to post these entries, first is cash account debit to capital account April 1, 1,50,000. So cash account debit, so 2020 April 1 to capital account 1,50,000. सो कैश के डेबिट में टू कैपिटल एंड कैपिटल के क्रेडिट में 2020 अप्रैल 1 बाय कैश अकाउंट. डेबिट वाला जो अकाउंट है इट स्टार्ट्स विथ बाय. सो बाय कैश अकाउंट 1,50,000. सो दिस इज़ द वे टू डू पोस्टिंग. ओके, जर्नल एंट्री को इस वे से पोस्ट किया जाता है इन डिफरेंट लेजर अकाउंट्स. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जर्नल एंट्री थी, तो कैश के डेबिट में टू कैपिटल एंड कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश. बस अब ऐसा ही टाइम पास हम बार बार करेंगे. ये क्लर्क का काम है. ओके, मैं लेजर में ज़्यादा मार्क्स नहीं रखूँगा बिकॉज आई फील दैट कि भाई लेजर इज़ एक्चुअली नॉट वर्क रिक्वायरिंग मेंटल calculations or thinking. Second is bank account debit to cash account 50,000. So बैंक के डेबिट में 50,000 अप्रैल 2 को टू कैश अकाउंट. ये कॉन्ट्रा है तो मैं सी लिख दूंगा. ओके, एंड कैश के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट. ये कॉन्ट्रा है तो आई विल इंडिकेट दिस विथ सी एंड अमाउंट है 50,000. सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज ऑन 3 अप्रैल फर्नीचर टू कैश 20,000. तो फर्नीचर के डेबिट में 20,000 अप्रैल 3 टू कैश, और कैश के क्रेडिट में 20,000 अप्रैल 3 बाय फर्नीचर अकाउंट. एक लेजर के डेबिट में, एक के क्रेडिट में. देन नेक्स्ट इज परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000 7 तारीख. सो परचेस डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 एंड टू कैश 7 तारीख को कैश के क्रेडिट साइड में बाय परचेस अकाउंट 30,000. नेक्स्ट इज परचेस टू हेमा ट्रेडर्स 8 तारीख 42,000. सो परचेस 8 तारीख को परचेस डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स 42,000. अब टू हेमा ट्रेडर्स 8 तारीख को बाय
purchase. Don't forget to record on both sides, otherwise your sum may not tally. दोनों ही लेजर अकाउंट्स में करना है, भूलना नहीं है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. अगर पोस्टिंग में मिस्टेक हो गई तो अकाउंट्स में फिर हिसाब मैच करने में बहुत ही परेशानी होगी. ओके, छोटी सी मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकती है, मिस्टेक को ढूंढना डिफ़िकल्ट होता है. देन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000 10 तारीख. सो 10 तारीख को कैश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 एंड टू सेल्स में क्रेडिट साइड में अप्रैल 10 को आई विल राइट बाय कैश अकाउंट 30,000. After this is done, next is Gupta Traders to sales 12,000 14 तारीख. So Gupta Traders debit 12,000 to सेल्स अकाउंट एंड टू सेल्स अकाउंट यानी सेल्स के क्रेडिट साइड में 14 तारीख को वी विल राइट बाय गुप्ता ट्रेडर्स का अकाउंट 12,000. आफ्टर दिस इज डन, नेक्स्ट इज रेंट टू कैश 4,000. So here rent to cash 4,000. It was on 16th date. So to cash में हम लिखेंगे by rent 4,000. सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि लेजर इज़ ऑल टुगेदर अ क्लरिकल जॉब. ओके, सो देन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश 18 तारीख 1,000. सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट on 18 1,000 टू कैश अकाउंट. इसकी सेकंड इफेक्ट टू कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट 1,000. After this is done, next is cash to Gupta 12,000 20 तारीख. So cash to Gupta traders and to Gupta traders 20 तारीख को हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 12,000. नेक्स्ट हेमा ट्रेडर्स टू परचेस रिटर्न 2,000 22 तारीख. सो हेमा ट्रेडर्स डेबिट to purchase return 2,000. Okay,
एंड सेकंड इफेक्ट परचेस रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय हेमा ट्रेडर्स account 2000. So I hope you are able to understand. It's the very monotonous and clerical work. Then Hema traders to cash 40,000. So 23 तारीख Hema traders to cash 40,000 and to cash, तो कैश क्रेडिट साइड में बाय हेमा ट्रेडर्स. हाउ मच? 40,000. Okay, next is postage to cash 25 तारीख 100 rupees. So postage to cash and to cash में हम लिखेंगे बाय पोस्टेज. एंड फाइनली सैलरी टू कैश 4,000 30 तारीख. सैलरी टू कैश and to cash by salary account 4,000. सो लेजर में कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अमाउंट में भी नहीं, साइड में भी नहीं, या कुछ मिसिंग भी नहीं होना चाहिए. एक साइड पर लिखा एक साइड पर नहीं लिखा, अदरवाइज अकाउंट्स टैली नहीं होगा, यानी मैच नहीं होगा. अब ये मैच क्या करना है, एक हम प्रोसेस अभी हम करेंगे. इट इज़ कॉल्ड कास्टिंग. कास्टिंग मीन्स टोटलिंग. टोटलिंग मीन्स फाइंडिंग द क्लोजिंग बैलेंस, जो ऑलरेडी हमने कैश बुक में किया है, जो हर लेजर अकाउंट्स में करेंगे. कैश में डेबिट साइड इज ऑलवेज मोर because you cannot spend more than what you have. So 150 plus 30, 180 plus 12, so it is 192. So I will write 1,92,000. Same total I will write 1,92,000, and here I will have some closing balance. So from 1,92,000 I will minus total of credit side. So by balance carried down, closing balance I will find. So let's do total of credit side. 50 plus 20, 70 plus 30, 1 lakh, 1,05,000, 1,45,000, 1,49,100. So you know I need to do the total 0 0. So it will be 10 minus 1 is 9. It will become 11 minus 9 is 2. It will become 8 minus 4 is 4. So 42,900, 42900. This is the closing cash. Now कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना ईजी है. यू कैन ईजिली सी, एक ही एंट्री है तो वही 1,50,000, वही 1,50,000, and here you will get the closing balance. Again it is 1,50,000. April 30 to balance carried down. Next we have here
50,000. Here also I will write 50,000. So I will get here one closing balance. It will also be 50,000, and it is by balance carried down. In furniture also only one entry is there, 20,000. And closing balance will also be 20,000. April 30, it is on last date, by balance carried down. Next account I will close, which is purchase account. So 30 plus 42 is 72,000. Here also 72,000, and closing balance will also be 72,000 on last date, by balance carried down. Then I have 40 plus 2, 42,000, and here also 42,000. So this ledger account is not having any balance. डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल भी होता है, इट मीन्स वो लेजर अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस इज ज़ीरो. ओके, यानी हेमा ट्रेडर्स को हमने सब पे कर दिया है. ओके, देन सेल्स अकाउंट में 30 plus 12, 42,000. Same will be written here, 42,000, and I will have closing balance of 42,000, and it is on April 30 to balance carried down. Then I will close Gupta Traders account, but here also you can see total of debit and total of credit is same. So Gupta Traders का अकाउंट भी ज़ीरो हो चुका है. So Gupta Traders लेजर बैलेंस इज ज़ीरो, हेमा ट्रेडर्स लेजर बैलेंस इज ज़ीरो. रेंट अकाउंट के केस में क्लोजिंग बैलेंस विल बी 4,000. by balance carried down. And then we will close electricity expense account, 1,000, 1,000 here on April 30 by balance carried down, 1,000. Then I will close purchase return account, 2,000. Here also 2,000. And on April 30 I will write to balance carried down, 2,000. Then I will close postage account, 100. It is my closing balance. So on last date April 30 I will write by balance carried down. And then I have to close this salaries account, 4,000. It is also 4,000. And April 30 I will write by balance carried down,
amount is 4,000. So we have finally closed all the ledger accounts, and I will also teach another concept. It is called trial balance. So I will write trial balance of measures Bhanu Traders as on last date was 30th April, in this case 2020. Now trial balance is altogether a different chapter. So trial balance and ledgers are connected. From journal we prepare ledger and from ledger we prepare trial balance. अब आप सोचोगे सर ये लेजर में से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे? ओके, सो लेजर बन गया तो ट्रायल बैलेंस बनाना इज़ वेरी इजी. एक्चुअली आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी लेजर अकाउंट्स आपने बनाए हैं, ओके, वो सभी लेजर अकाउंट्स की जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको लिख लेनी है, एंड ऑटोमेटिकली टोटल ऑफ डेबिट लेजर अकाउंट्स एंड टोटल ऑफ क्रेडिट लेजर अकाउंट बैलेंसेस हैज़ टू बी सेम. ओके, तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट इस तरह से होता है: नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ लेजर अकाउंट, देन डेबिट amount, and then credit amount. Okay, एक serial number if you wish you can add. serial number हालांकि compulsory नहीं है. if you wish you can write serial number. तो सबसे पहले कौन सा ledger account हमने close किया था? yes, your guess was correct, cash account. now rule number 1, जो लेजर अकाउंट की बैलेंस लिखी गई है क्रेडिट साइड में वो बेसिकली डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा थी इसलिए डिफरेंस दूसरी साइड आया. तो लिखा क्रेडिट में वो डेबिट बैलेंस है, और तो डेबिट में लिखा है वो क्रेडिट बैलेंस है. क्लोजिंग बैलेंस रिवर्स साइड पर लिखी जाती है. दैट डजेंट चेंज द नेचर ऑफ बैलेंस. तो कैश की बैलेंस भले लिखी क्रेडिट में है बट वो डेबिट बैलेंस है 42,900. सो आई विल राइट कैश की बैलेंस वो है डेबिट 42,900. फिर क्लोज किया था, आई थिंक इट वॉज कैपिटल अकाउंट. लुक हियर, कैश के बाद कैपिटल अकाउंट आपने क्लोज किया था एंड उसकी क्लोजिंग है 1,50,000. बट 1,50,000 लिखा भले डेबिट में है बट वो रिवर्स होती है क्रेडिट बैलेंस. ओके, थर्ड वन, आफ्टर कैपिटल बैंक अकाउंट. बैंक में 50,000 डेबिट बैलेंस है. सो आई विल राइट बैंक अकाउंट 50,000. ओके, आफ्टर बैंक फर्नीचर में डेबिट बैलेंस है 20,000. सो फोर्थ इज फर्नीचर अकाउंट, डेबिट बैलेंस 20,000. आफ्टर फर्नीचर नेक्स्ट वॉज परचेज अकाउंट जिसमें डेबिट बैलेंस है 72,000. सो देन वी हैव परचेज अकाउंट. आई एम हैविंग डेबिट बैलेंस एज 72,000. आफ्टर परचेज अकाउंट आई हैड प्रिपेयर्ड हेमा ट्रेडर्स अकाउंट जिसकी बैलेंस ही नहीं है तो ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना है. देन आई हैव सेल्स अकाउंट, सेल्स में क्रेडिट बैलेंस है 42,000. सो आई विल राइट सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इज 42,000. देन आई हैव गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट जिसकी बैलेंस ही नहीं है, नो नीड टू राइट. देन रेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस इज 4,000. सो सेवंथ आई विल राइट रेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस इज 4,000. आफ्टर रेंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में डेबिट बैलेंस है 1,000. यस, तो 8th इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस 1,000. फिर परचेज रिटर्न में क्रेडिट बैलेंस था 2,000. सो आई विल राइट
परचेज रिटर्न अकाउंट एंड क्रेडिट बैलेंस इज 2000. ओके, डेबिट साइड पर है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है. देन 10th वन पोस्टेज एक्सपेंसेस अकाउंट, वो है डेबिट 100. एंड 11th वन सैलरीज अकाउंट, वो डेबिट है 4000. एंड होल्ड योर ब्रेथ, अगर सब कुछ सही किया होगा तो टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होगा. लेट्स चेक दिस. 150 प्लस 42 192 प्लस 2 194. सो ये है 1,94,000. नाउ चलिए इसका टोटल करते हैं. 42 प्लस 20 70 प्लस 72 142 प्लस 4 146 प्लस 1 147 प्लस 4 151 100. तो 151 100 और एक ऊपर वाला 42 900 मुझे ऐड करना है. सो 0 0 1 प्लस 9 10 रेज टू 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 5 प्लस 4 9 1,94,000. Wow. Okay, so finally after taking so much of pain, there is a smile or cry or pain depending on whether you like it or not. But you know, it's clerical, it takes more time, but we feel happy when we are able to get total of debit and credit equal. Okay, so if you are having good concentration, you can get this correct in the first try. But if you are not able to get this debit and credit correct, it means that there is some error. So trial balance will ensure arithmetical accuracy of your accounting. If your accounting is correct, then trial balance will tally. अब माई क्वेश्चन टू यू इज कि ये टैली क्यों होता है डेबिट एंड क्रेडिट. सो रूल इज़ वेरी सिंपल. हर जर्नल एंट्री में डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल था, येस और नो? येस. तो फिर ट्रायल बैलेंस में वही चीज़ तो लिखी है. तो डेबिट एंड क्रेडिट अगर हर जर्नल एंट्री में सेम था, उसी से लेजर बना है, उसी से ट्रायल बैलेंस बना है, तो ये इक्वल ही होना चाहिए. वन मोर थिंग, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था. एसेट का अकाउंट एंड एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होता है, आप चेक कर सकते हो, वही अकाउंट्स डेबिट हुए हैं. एंड लायबिलिटी का अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट या फिर इनकम का अकाउंट क्रेडिट होता है. ओके, ज़्यादातर अकाउंट्स डेबिट वाले होते हैं, क्रेडिट में कम अकाउंट्स होते हैं. क्रेडिट में देखो कैपिटल, यस कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होती है. सेल्स इज योर इनकम, वो भी क्रेडिट होता है. परचेस रिटर्न, अब याद रखिए परचेस रिटर्न इज द ऑपोजिट ऑफ परचेस. सो परचेस डेबिट है, ये अल्टीमेटली उससे माइनस होने वाला है, हैंस वो क्रेडिट है. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, प्रैक्टिस वेल. एंड दिस चैप्टर इज़ नॉट प्रैक्टिकली मच इम्पोर्टेंट क्योंकि ये क्लर्क का काम है. ओके, बट यू नो कुछ बनने के लिए छोटी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ती है. ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट. बाय बाय.